Hello everyone, myself Vaibhav Mishra. I welcome you all to Kalam IAS. Today we will be having discussion of mains question paper of internal security that is a part of GS paper 3. These questions are from UPSC mains 2023. We have already had a trend analysis on this year papers of all subjects including internal security. So let us begin. First of all, those have not seen the syllabus yet and those have not seen the paper of this year, for them just in a brief way we will be discussing the paper and the syllabus. If you see, you have seen the syllabus of internal security. It is a very short syllabus, you can easily complete in around 7 to 10 days. The topics are very important, like linkage between development and spread of extremism, then role of external and non-state actors in challenge to internal security. If you see today's this year question, so question has been directly asked from the topic, and each year also question more or less has come directly on the topic. If you see last year question, it was on Naxalism, it was on maritime security, it was on cyber security. This was direct from syllabus. This year question also, if you see once again, challenges to internal security. This is again, see, the challenges to internal security is direct question from the syllabus itself. Also terror funding, these all things are also part of syllabus. Militancy in Jammu and Kashmir, this is one, can be from development and spread of extremism, and also from role of state and non-state actors. So this way you can see that the question comes from syllabus itself. This year there were two 15 marker question and two 10 mark question. One by one we will be seeing the questions. But before we discuss the answer of the question, you must know how to approach the question and how to approach overall the internal security. First we will talk about the subject and then we will be talking about the question. If you see the subject of internal security, as I have already shown you through the syllabus, that it is a very short syllabus. You can go through the syllabus after the class entirely, one by one, and if you see the syllabus is very short, you can cover it in 17 days, that is okay. But what is the problem? It is not that the question is not coming, 4 questions are coming, more or less 50 marks weightage is there in GS paper 3, and that is around 25%, 20%, sorry. So if you see the syllabus is short, then what is the problem? Why people are not getting marks? First of all, while studying you have to follow a strategy. What? First you have to do the basics, or after basics what you have to do, you have to keep on adding note, current affair in your notes. So this is the thing which most of people forget, क्योंकि क्लास में आप अभी पढ़ रहे हो मान लो, एंड एग्जाम आपका एक साल बाद है, बीच में प्रीलिम्स भी आ रहा है, आप छोड़ देते हो एंड करंट के लिंकेजेस भूल जाते हो. आपको अपडेट करना है रेगुलरली ऑफ योर नोट्स. बेसिक 40-50 पेजेस में आपके नोट्स कवर हो जाएंगे सिक्योरिटी के, बट करंट अफेयर, द एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम करंट अफेयर्स. एंड nowadays if you see this year papers, the question पूरा करंट अफेयर से डायरेक्ट उठ रहा है. द क्वेश्चन ऑफ नो मनी फॉर टेरर conference directly of November 2022, the question has been asked directly. Coming back to the strategy, first you have to see the basic and the current affair, but while making notes, what is the thing?
आप कहीं से भी किसी भी क्लास से अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ो या सेल्फ पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, बेसिक्स बनाता है। टॉपिक्स कैसे, हाउ यू डिवाइड, सपोज अ टॉपिक इज देयर, एनी टॉपिक, टेक एग्जांपल ऑफ मे बी नक्सलिज्म, मे बी बॉर्डर मैनेजमेंट, आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक्स दैट इज डेफिनेशंस, देन कॉन्सेप्ट्स, ये आपको देखना है। फिर क्या करना है आपको, इस पे आप नोट्स बना लीजिए, 4 to 5 लाइन्स इनफ, क्योंकि आप ऑलरेडी समझे हुए हैं। देन व्हाट यू विल डू, सेकेंड थिंग इज there are causes, if something is there, nationalism is there, causes that you have to know. Then what kind of challenges, issues, effects, more or less same answer आएगा सबका। And fourth and most important is government efforts. UPSC is asking more on government efforts. Why? If you see, basics will not change, causes is mostly the same. If you see, issues, effect will be also the same. If you write the same also, you will fetch some marks. But government efforts, each year government is trying to upgrade its efforts. So this is important. So this way you can write this and a way forward. आप सिर्फ 5 चीजें अगर आप प्रिपेयर कर लोगे हर टॉपिक पे, देन यू कैन इजीली फेच गुड मार्क्स। और इसके ऊपर क्या करना है, आपको करंट अफेयर अपडेट करना है। कहाँ पे अपडेट करना है, मोस्टली गवर्नमेंट एफर्ट्स पे अपडेट करना होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर द टॉपिक्स इन इंटरनल सिक्योरिटी। वंस यू प्रिपेयर, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो मेंस के क्वेश्चन। एंड हाउ यू विल राइट मेंस आंसर, that we will be taking example of this year mains question and we will be learning through that. Let's begin. So already when we were discussing trend analysis, I have taken this question, but for those people who have not seen that video, I will be telling the answer in a little quick manner. आप वहां भी detailed discussion देख सकते हैं इसका. So what is the question? The question is, winning the hearts and minds in counter-terrorism affected areas is an essential step in restoring the trust of population. Discuss the measures adopted by the government in this respect as part of conflict in Jammu Kashmir. Before we start the discussion again, I have already told the approach, the strategy for preparation of subject. Now first I will be telling you strategy and approach for answer writing. If you see internal security or any subject for that matter, you will be dividing your answer in 3 parts. And what is that? You know, introduction, main body and conclusion. Again here also you can divide the answer in 3 parts. Introduction around 25 words, conclusion again 10%, कितना है 150 वर्ड्स है, तो आप 15-20 वर्ड्स में आप खत्म कीजिए। एंड रेस्ट यू विल बी राइटिंग इन द मेन बॉडी, ठीक है। तो दिस वे इफ देयर इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन, देन ट्राई टू राइट अराउंड 100 वर्ड्स, 100 to 100 125 वर्ड्स, एंड अराउंड इन 200 वर्ड्स यू विल बी राइटिंग मेन बॉडीज फॉर 15 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस वे you can structure your answer. अब इंट्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या डाल सकते हो। इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं हम, डेफिनेशन डाल सकते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स डाल सकते हैं, एग्जाम्पल डाल सकते हैं, रिसेंट इवेंट्स डाल सकते हैं। And this I will show you through answer of each question. Conclusion में क्या कर सकते हो,
कंक्लूजन में अगेन व्हाट यू कैन डू, कंक्लूजन क्रेडिबल होना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव वे में आपको लिखना है कंक्लूजन, बहुत ज्यादा निगेटिव अप्रोच नहीं रख सकते हो। यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, यू शुड हैव अ पॉजिटिव इंटेंट, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अप्रोच होनी चाहिए आपको। ऑल्सो यू कैन राइट सम पॉलिसी विजन, आजकल तो मोदी जी और आसान कर दिए हैं, ही गिव सो मेनी एक्रोनिम्स, इसको आप यूज कर सकते हैं कंक्लूजन में, है ना। सो मेनी थिंग यू कैन राइट। सो लेट्स स्टार्ट। So coming back to our question, winning the hearts and minds in terrorism affected area, this is the starting statement. And then what is the question? The question is about measures adopted by government in this respect as a part of conflict resolution. So what is the respect? Measures have been asked, but what is about this? This is about winning of hearts and minds. That means you must know what is winning of hearts and mind. This is WHAM, WHAM. This strategy is actually a very old strategy. Many people have already advocated this for development of Kashmir, for ending militancy in Kashmir. So for ending the militancy, WHAM strategy was already there have been many instances when different analysts have talked about this. Now what is this? This is the approach where you have to do positive thing, development is needed. Even if you see back then the Vajpayee government at that time, the Prime Minister Vajpayee, for development of Kashmir, he has given three things. What was that? Kashmiriyat, Jamhuriyat, Insaniyat, that is famously called as Vajpayee doctrine. What was these three things? Kashmiriyat, about identity of people of Kashmir, then Insaniyat and Jamhuriyat, democracy, and about humanity. Insaniyat is about humanity. So you can give an introduction through this. इससे क्या हो रहा है? See, in this introduction, what the prelude is there, that is being linked to what has been asked. So this can be said as a very good introduction. तो आपको introduction ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए, now moving back to words भी देखो आप कम है, ठीक है। अब मेन बॉडी पे आते हैं। सी, in first two question I will be teaching you different introduction, and you try, I will give you certain time, you try in the third fourth question कि आप खुद क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हो। थोड़ा देर आप पॉज कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि क्या इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, मेन बॉडी क्या पूछा है? मेजर्स। तो हमें मेजर्स लिखने हैं। व्हाट इज द एफर्ट, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट लाना चाहती है कैसे। तो सबसे पहले बेसिक थिंग, it first want to tackle the terrorism. Why? Because the root cause was terrorism for the discontent. And second thing, it want to deepen the political process. Talking about jamhuriyat, democracy, कैसे आएगा? Political process से. Then development of the region. आखिर वैम स्ट्रैटेजी में क्या है? डेवलपमेंट ही तो करना है। अब टैकलिंग टेररिज्म कैसे? बोथ एट रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल, दोनों करना है। इंटरनली देखिए, टेररिज्म बढ़ रहा था, स्टोन पिल्टिंग वगैरह हो रही थी, अभी केसेस कम हो गए ना। उस समय भले ही स्ट्रिक्ट मेजर लेना पड़ा, जैसे 4G को बैन करना पड़ा, बट इट वाज वर्थ। देन सर्टेन लीडर्स हु वेर, अब बहुत सारे लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना पड़ा, like Jamaati Islamia has to be banned.
it was front organization for it was related to terrorism in Kashmir. And you have seen that before 2 years back a question was asked on this also. You should go and check the previous year questions. Okay. Then at international level also we are fighting against Pak sponsored terrorism. Coming back to deepening political process, how we are political process को कैसे renew कर रहे हैं, कैसे democracy ला रहे हैं. सबसे पहले आर्टिकल 370, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये हुआ. इससे और क्या डेवलपमेंट एसोसिएटेड हुआ? सर्टेन older laws which were not required that has been scrapped, and certain laws like RTI came here. और इससे क्या हुआ? Increase in transparency, better governance. Then we will also see that local governance through Ladakh Autonomous Council for example. इससे क्या हो रहा है कि democracy is penetrating to the lowest level, grassroots level. ओके, करप्शन कम होगा, काम ज्यादा होगा, अधिक होगा. और काम कैसे होगा? डेवलपमेंटल ऑफ द रीजन थ्रू डेवलपमेंटल पैकेज. 80,000 crore पैकेज हैज बीन गिवन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रीजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन. टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव सीन हाउ चेनाब पे ब्रिजेस बन रहे हैं. देन you will see different IITs and aims have been set up, different institutes. Then for the youth engagement around 10,000 vacancies are there. क्योंकि youth free नहीं रहना चाहिए, youth को constructive work में involve होना चाहिए, and that is why these all things have been done. Community engagement करना है. Operation सद्भावना, how the armed forces are helping the development of Kashmir. So आपका positive image भी बनना है, perception change होना है. It is not that armed forces can alone do the work. Local people have to be involved for the development of the region. And these all things are doing with through positive perception, through with the help of social media, then national media, and also if you see the perception change and the development work are doing good. How we can see? थोड़ा दिन पहले हमने we tried that G20 meeting हो, that did not happen. But if you see now we are having Miss World contest in Srinagar, and you will see that UAE is trying to do FDI in Kashmir. So see how different development mission has helped to change the perception. Because whenever you do development, for example horticulture mission आया, तो इससे क्या हुआ? इससे जॉब्स आएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, परसेप्शन चेंज होगा लोकल पीपल का, एंड उससे क्या होगा? बाहर के फ्लो भी आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, एवरीथिंग इज चेंज, डेवलपमेंट ओवरऑल होने लगेगा. So this is how development should be there. This is how WAM strategy should be applied. ठीक है, चलिए, how you will conclude? Think. Strike at the main point. If you are talking about WAM strategy, if you are talking about discontent, then the root cause of discontent should be removed, that is terrorism. And how we will do? Through development, different stakeholders should be approached. तो ऐसे करके आप एक कंक्लूजन भी लिख सकते हैं. अच्छा, ठीक है, डायलॉग एंड कोऑपरेशन होना चाहिए. चलिए, सो दिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कैसे लिखे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. मजा आया? ओके, सो वी विल बी हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स. अच्छा, think of why the last question has came. क्योंकि देखिए गवर्नमेंट is continuously trying from last 5-6 years
has given more emphasis on development of कश्मीर। ऐसा नहीं है कि पहले की गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, बट इट हैज केम टू फॉरफ्रंट। और जब भी गवर्नमेंट एफर्ट लगाएगी किसी डायरेक्शन में, तो देयर इज अ चांसेस दैट अ क्वेश्चन मे कम। सी यू हैव टू आल्सो थिंक कि कहां से क्वेश्चन आए, देन ओनली यू कैन प्रिडिक्ट नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स बिगिन। The use of unmanned aerial vehicle by our adversary in the border to ferry arms, ammunition, drugs, etc. is a serious threat to internal security. Means they have already told that the UIV is serious threat. And how it is serious threat? Because arms, ammunition, drugs, etc. are being carried out. So they have clarified this. Then what they have asked, comment on the measure taken to tackle the threat. So you have seen that in the previous question also the question was related to government effort, and here also the question is related to government efforts. And that's why government efforts, government measure, I have already told you, should be given highest importance in your notes, and it should be always updated. चलिए, तो again introduction, main body and conclusion. How will we introduce? एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोलिफरेशन ऑफ यूएवी के बारे में हम लिखते हैं, एज स्पेशली रेज स्पेशली द कॉमर्शियल ड्रोन्स, द स्मॉल ड्रोन्स हैव कॉज्ड कंसर्न। क्यों? क्योंकि वी हैव सीन व्हाट दे आर डूइंग, टेररिज्म, स्मगलिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्नूपिंग, मिड एयर कोलिजन, बहुत सारी चीज करती है। इट इज नॉट दैट इट इज जस्ट कैरिंग द it is not just helping in smuggling, but it is also helping in terrorism, in snooping. Then snooping क्या हुआ? That is you can spying over someone. Then mid air collision भी हो सकता है अगर दूसरे बॉडी से टकरा गया। Then some examples, एग्जाम्पल कैसे किए? जैसे जम्मू एयरबेस पे अटैक, पुंछ पे अटैक। What was that? These were done through drones. Now see what I have told you, that in introduction what you can do, you can write definition, you can give reports, you can give example, you can give recent events, you can give data. अभी हम देखते हैं कि what could be the next introduction. For example, the report. What the report says, that 166 drones have been sighted along the border with Pakistan in 2019, and in 2077 such sightings. So this is what, this is a report. And also see these report in the middle also, if you are in the support of your answer, in the support of your question, you can write here. आप और क्या कर सकते हैं, आप छोटे छोटे इनोवेशन भी ला सकते हैं। कैसे? जैसे अगर ये आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो साथ में छोटा सा मैप बना दीजिए, ये 2019, ये 2020, ये 2020, यहाँ पर 167, यहाँ पर 77, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे ईयर, और यहाँ आप लिख दो नंबर ऑफ, this pen is not working, drone sighted. It is not visible, it is number of drone sighted, and this is year. ऐसे आप छोटा सा मैप बना सकते हैं, and this is what fetch you more marks. प्रेजेंटेशन हो गया, एग्जामिनर को पढ़ने नहीं जा रहा, ऐसे दिख गया, आपके एफर्ट्स को भी एग्जामिनर देख रहा है। तो इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स भी आपको लेने हैं, ठीक है, ताकि आप भीड़ से थोड़ा हटे, बिकॉज इवन अ हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स इज मोर इन वन क्वेश्चन दैट कैन इफेक्ट यू। अगर आप 5-7 क्वेश्चन भी ऐसे निकाल सकते हो इन द पेपर, देन इट विल फेच यू 5 मार्क्स 6 मार्क्स मोर, एंड 5 मार्क्स 6 मार्क्स मोर इन 4 पेपर, दैट इज 20 मार्क्स मोर, एंड 20 मार्क्स कैन आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। कहाँ IRS मिलने वाला था, IAS मिल जाएगा, कहाँ लिस्ट के बाहर होने वाले थे, आपको IITS मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल
रिसेंट एग्जांपल न्यूज से। कैसे? अभी देखिए BSF शूट डाउन अनदर नारकोटिक्स लेडन पाकिस्तान ड्रोन इन अमृतसर, ये अभी का न्यूज़ है। उससे पहले भी लास्ट ईयर BSF has shut down uh, shut down the drone carrying narcotics. So you can, this all three methods I have given you, through data, through examples, through news and linkage. This is also one type of introduction. तो ऐसे आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दिस इन दिस आंसर you have learned how to introduce answer in different method. अब आप नेक्स्ट आंसर में खुद ही इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा जब भी आप आंसर करेंगे। तो चलिए मेन बॉडी पे आते हैं। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन अबाउट? द क्वेश्चन अबाउट मेजर्स, कमेंट ऑन द मेजर्स। तो सबसे पहले मेजर्स जानना जरूरी है। एंड व्हाट आर द मेजर्स? तो मेजर्स को इफ यू अगेन सी, मेजर्स को डिवाइड करना है तो ऐसे नहीं कि एक एक पॉइंट लिख रहे हैं, यू हैव टू डिवाइड दैट इन डिफरेंट पॉइंट्स, कैटेगराइज करना है। कैटेगराइजेशन इज मस्ट, ताकि आपको सब हेडिंग्स एंड हेडिंग्स मिल सके। एग्जामिनर सारी पॉइंट नहीं पढ़ेगा, बट इफ इवन इफ यू रिटन द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, देन ही हैज अ ब्रीफ आइडिया। एंड फिर आप जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अगर आप एग्जामिनर को डिफिकल्टी नहीं देंगे अपने आंसर को पढ़ने के लिए, देन ही विल also not give you difficulty in return and he can give you good marks. Okay, let's begin. So what are the measures? Legal measures, technical measures, infrastructural measure, institutional measure. Legal measure कैसे? ड्रोन के लिए क्या लाए हम? एंटी ड्रोन पॉलिसी लाए हैं, एंटी रोग ड्रोन पॉलिसी, एंटी रोग ड्रोन पॉलिसी, SOPs, पंजाब बॉर्डर में ये काम कर रहा है। Then new drone policies, we have brought new drone policies, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स कैसे? हम we are adopting new technologies. For example, DRDO, we have taken the help of DRDO as indigenously built anti-drone system. DRDO anti-drone system. And in 2022's in Independence Day parade, actually DRDO this drone system, anti-drone system was actually deployed in on Red Fort. Infrastructural measures, देखिए क्या हो रहा है। We launched PLI schemes. In PLI schemes, we are giving incentive around 120 crore incentive for drone industries. Then institutional measure, anti-drone, anti-rogue drone committees are there, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स भी हो गया आपका। ऐसे आप चेंज करेंगे। कमिटी एंगेजमेंट कैसे? वी आर ट्रेनिंग द डिफरेंट पॉपुलेशन, इवन मोस्टली ऑन द बॉर्डर एरियाज, टू सी व्हाट ड्रोन्स को आपको चेक करना है कि आप देखो कि कहीं कुछ वैसे RDX या फिर कुछ वैसा ड्रोन तो नहीं आ रहा है, सस्पिशियस ड्रोन आ सकती हैं, तो आप कम्युनिटीज़ को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, फॉर एग्जांपल इंडिया US IC8 collaboration for drone technology. Already if you see, certain countries are highly equipped, highly advanced in drone, and we are lacking. For example, Turkey, बहुत ज़्यादा हम पीछे नहीं है, but we should be like advancing in these fields, because this is like next generation warfare में ये यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट टेररिस्ट ये यूज़ कर रहे हैं। Technologies warfare will be the next generation warfare. Manpower is not will go backwards. Cyber warfare kind of things will be the 5th generation warfare. ठीक है, चलिए। So measures you can write. Next, if you see, you have written the measure, but you have to comment. Comment क्या करना है कि क्या concern है, क्या positiveness है, क्या problems है, ये आपको बतानी है। तो क्या प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजिकल कंसर्न। कैसे?
कि ओके एंटी ड्रोन सिस्टम आप लगा दिए, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? दीज आर कॉस्टली एंड ऑल्सो व्हाट इज द थिंग, देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर स्वार्म ड्रोन है, बहुत सारे छोटे छोटे ड्रोन एक साथ आ गए, स्मॉल ड्रोन है, देन दिस इज नॉट इफेक्टिव। तो फायदा क्या हो रहा है एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने का? देन पॉलिसी कंसर्न, कोई सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं बना है एंटी ड्रोन स्ट्रैटेजी कि क्या करेंगे हम, छोटे ड्रोन, बड़े ड्रोन, हर तरीके के ड्रोन का। फिर वी हैव अडॉप्टेड न्यू ड्रोन पॉलिसीज, लेकिन क्या हर चीज अडॉप्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कंप्लायंस। देन ह्यूमन रिसोर्स कंसर्न, what is that? Even if you made the drone even at the higher cost also, but people are not trained in this, the forces, the jawans are not trained at this, तो आपको वहां भी ट्रेनिंग देना है। एंटी ड्रोन मेजर्स ले रहे हो, पर क्या उनको ट्रेनिंग है कि उसको यूज कैसे करना है? so that is the problem. so we have read the concern, then हम कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूड कैसे करेंगे? जैसे मैंने क्या बोला कंक्लूजन अबाउट पॉलिसी, तो पॉलिसी के बारे में लिख सकते हैं कि हॉलिस्टिक स्ट्रैटेजी नहीं है, हॉलिस्टिक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से हम कंक्लूजन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हाउ वी कैन कंक्लूड, हाउ वी कैन राइट एन आंसर। यू हैव गॉट द पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हम 10 मार्कर क्वेश्चन देख रहे थे, अब विल बी मूविंग टू 15 मार्कर क्वेश्चन। अगर आप 10 मार्कर में 7 to 8 पॉइंट्स लिखते हैं तो 15 मार्कर में 13 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। ओके, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन तो सेम है, सेम ही चीज़ आप लिखोगे। नंबर ऑफ वर्ड्स भी आप देखो, अगर इफ़ यू आर कंप्लीटिंग इन 125 वर्ड द मेन बॉडी फॉर द 10 मार्कर, फॉर 15 मार्कर इट विल बी अराउंड 200 वर्ड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। What is the question? What are the internal security challenges being faced by India? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गया। What is the question? Internal security challenges faced by India. So this is the first part. Second, give out the role of central intelligence and investigative agency to counter such threat. मतलब थ्रेट है, इस थ्रेट को काउंटर करना है, कौन करेगी? सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, एंड व्हाट इज देयर रोल। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? रोल पूछा। किसका? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। यू कैन राइट इट टुगेदर और यू कैन राइट इट सेपरेटली, दैट यू विल सी। बट नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यू विल बी ट्राइंग इंट्रोडक्शन। सो सोचो आप इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे। चलिए हम एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। What is introduction? In introduction, we have talked about different threats, क्योंकि it was about different challenges। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं। What are the threats? मिलिटेंसी है, इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में है, मिलिटेंसी कश्मीर में है। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है जैसे साइबर थ्रेट, मनी लॉन्ड्रिंग, न्यू टेररिज्म। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। देन चैलेंजेस। अदर इंट्रोडक्शन क्या है? सॉरी, इंट्रोडक्शन में आप रैंकिंग दे सकते हैं। सी इफ देयर इज एन इंडेक्स देन यू कैन इजीली यूज दिस इन इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल हियर द इंडेक्स वाज वर्ल्ड इंटरनल सिक्योरिटी एंड पुलिस इंडेक्स, एंड व्हाट इज आवर रैंक? आवर रैंक इज 104। तो आप इसको यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, या तो आप थ्रेड्स के थ्रू जा सकते हैं, एक डेटा दे सकते हैं। तो दिस कुड अगेन बी एन इंट्रोडक्शन। चलिए इंट्रोडक्शन इस बार भी मैं ही बताया हूँ, एटलीस्ट लास्ट क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन सोचेंगे। ठीक है, चलिए मेन बॉडी। अगेन वी हैव थॉट दैट देयर आर टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट वाज अबाउट इंटरनल चैलेंजेस, सॉरी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। सो व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस कैसे लिख सकते हैं? वन वे इज दैट यू राइट इन अगेन सब कैटेगराइजिंग द चैलेंजेस। व्हाट आर दीज? फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल चैलेंजेस। एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या है? होस्टाइल नेबर्स, पाकिस्तान, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म थ्रू इन कश्मीर, चाइना is helping insurgency in northeast,
देन ज्योग्राफिकल चैलेंजेस, पोरस बॉर्डर हो रहा है, बांग्लादेश के साथ ब्रह्मपुत्र रिवर पे फेंसिंग नहीं कर सकते हैं, टेरेन इज डिफिकल्ट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देर आर हिल्स, देर आर वैलीज एंड देर डूइंग गोरिल्ला वारफेयर, आप लड़ नहीं सकते हो वहाँ पे। बॉर्डर फोर्सेस को देखो 50 ईयर्स हो गए बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू एलिमिनेट ऑल द इंसर्जेंट ग्रुप। देन सोशल चैलेंजेस, how the diversity of India has itself become problem for India. Caste, caste, ethnicity, ethnic conflict is there. Then caste conflict is there. ये सब क्या कर रहा है? These are causing disharmony in the nation. These are destroying the peace of nation. National integrity के against हैं ये. Then development deficit challenge and socio-economic challenges, both are mostly linked. Development deficit challenge, if you see the reason for Naxalism, one of the reason for Naxalism, if you see, is lack of development. Naxalism is a great example for the topic linkage between extremism and development. That is your first topic in the syllabus. क्यों? क्योंकि यहाँ पे extremism and development is linked. Due to lack of development, extremism is happening. Some also says because of extremism, development is not happening. That can also be the case. ठीक है, यहाँ पे लोगों को काम करने का नहीं है, यूथ को पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट नहीं है. व्हाट दे विल डू, दे गेट इजीली लर्ड बाय द radicalization of Naxals and they join Naxal. So this is again a developmental challenge. Then socio-economic challenges, the inequality, what this will cause? This will cause a feeling of distrust among the population. The population has 60% of wealth. To be precise, 59. Please check the Oxfam report. Socio-economic challenges, then technical challenges, new form of challenges. How? In the form of cyber warfare, in the form of say a new kind of warfare, biological weapon. ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक चैलेंज है. We have seen that China is raising a cyber warrior, around 12,000 cyber warriors. So what it will cause? It will cause harm to India's internal security. How Mumbai power outrage was done. This was again an act of terrorism. Some analysts say that this was an act of terrorism. And if you see, for few minutes, if there is a power outrage, then it will cause you loss of billions of dollars. ठीक है? So these are threats to internal security. Now, how can you write this answer in a different way? आप threats के साथ भी लिख सकते हो. कैसे? What were the threats? Threat क्या है? नक्सलिज्म है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, फाइनेंशियल थ्रेट है, क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स है, सो कल्चर रिलीजियस थ्रेट है. इसको लिख सकते हो इस फॉर्म में भी कि हाँ नक्सलिज्म है थ्रू रेड कॉरिडोर, इंसर्जेंसी है इन नॉर्थ ईस्ट. इवन एक आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, इंडिया की मैप बना सकते हैं एंड डिफरेंट थ्रेट्स दिखा सकते हैं. माई मैप इज नॉट वेरी गुड, यू ड्रॉ अ गुड मैप. ठीक है, यू कैन से एट इकोनॉमिक सेंटर साइबर वारफेयर यहाँ हो सकता है, साइबर अटैक्स. देन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन इंसर्जेंसी विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड म्यांमार बॉर्डर. देन थ्रू पाकिस्तान एक्सट्रीमिज्म. तो ऐसे आप दिखा सकते हो, रेड कॉरिडोर यहाँ दिखा सकते हो. अगेन इफ यू ड्रॉ मैप, इफ यू प्रेजेंट समथिंग इन अ गुड वे, डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, तो आपको मार्क्स बढ़ सकता है. एंड फर्स्ट पार्ट वाज स्ट्रक्चर दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न एंड द सेकंड पार्ट इज प्रेजेंटेशन. एंड दिस प्रेजेंटेशन यू हैव टू डेवलप बाय योरसेल्फ. आपको जहां मौका मिले अच्छा प्रेजेंट करने का, आप प्रेजेंट करो थ्रू डायग्राम, फ्लो चार्ट्स. ठीक है,
maps. Then first part is over, we'll be writing second part. Already we have written 5 to 6 points, that is enough. Because already if you see there is, if you consider 2 or 3 parts is there. So first is, now you can write role of Central Intelligence and Investigative Agency एक साथ भी, क्योंकि more or less they're doing similar work, but also you can divide because intelligence gathering is different and investigation is different. What is intelligence? Intelligence is gathering of your information. Investigation can be done even after intelligence has been gathered. ठीक है, चलिए, तो ये डिवाइड कर सकते हैं आप ऐसे. डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, मैटर लिखना है, तो इंटेलिजेंस एजेंसी. अब देखिए, यू हैव टू ऑल्सो कंसीडर द लिमिटेशन ऑफ द स्पेस. उस स्पेस में लिमिटेशन के रीजन में आपको क्या करना होगा, यू हैव टू राइट द मेन पॉइंट फर्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंस एजेंसी तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी को आपको पहले लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द 3 प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी, द रॉ, द आईबी एंड एनटीआरओ. तो आप उसके बारे में लिखोगे कैसे. फॉर एग्जाम्पल, आईबी इज फॉर इंटरनल इंटेलिजेंस. पहले भी दिस इज अ बॉडी विच वॉज क्रिएटेड बाई ब्रिटिश itself. That time it worked closely with MI5 and Scotland Yard. पहले खुद if you see the region of Afghanistan, India, जो पूरा ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था जो उससे एसोसिएटेड था, वहाँ के रीजन में इंटरनल इंटेलिजेंस गैदर करता था. इवन दिस वाज यूज्ड प्रीवियसली फॉर स्कूपिंग अगेंस्ट the what you called the nationalist. Coming back to present, it is used for internal intelligence. आप देखोगे इवन पासपोर्ट वेरिफिकेशन यहाँ से हो रहा है, क्यों, क्योंकि कोई चूक ना हो जाए इन इंटेलिजेंस. बाहर से आ सकते हैं थ्रू द पोरस बॉर्डर एंड देन दे विल टेक द सिटीजनशिप. और इससे क्या होगा, इससे आप यहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स करेंगे लेकिन आप पकड़ पे नहीं पाओगे. सो इंटरनल इंटेलिजेंस इज नीडेड. रॉ फॉर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस. आफ्टर 1962 and 65 war, it was felt that for the neighboring countries, for the outside India intelligence, there should be a specialized wing. So IB, from IB the responsibility was given to RAW. You remember R and cow. RAW are also called the cowboys. Then Prime Minister Indira Gandhi gave the responsibility to R and cow, for he made him the first chief of RAW, and it continued, the separation continued. But next NTRO came. After the Kargil war, it was felt that technical intelligence is missing, and there should be certain specialization for technical intelligence, and for that NTRO was established. So these 3 are primary. अब इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज. फॉर एग्जांपल, द प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी CBI, NIA. CBI, दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट. इट हैज मेनी पावर. पूरा आप लक्ष्मीकांत को इसमें डाल सकते हो, खुश हो जाओगे आप CBI का नाम सुन के आप तो. चलिए NIA पे आते हैं. NIA पे क्या है, again after Mumbai terror attack, NIA was formed for investigation against anti-terrorism, counter-terrorism operation. तो यहाँ पे आप देखिए, इफ यू सी, आप और भी पॉइंट लिख सकते हैं, बट प्राइमरी यही है. फॉर एग्जांपल, आप इंटेलिजेंस एजेंसी में FI, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स को लिख सकते हैं. नेट ग्रिड के बारे में लिख सकते हैं. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट सम सस्पिशियस इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेज करती है ये. देन अगेन NTRO, इंटेलिजेंस अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटी. तो ये सारी चीज आप लिख सकते हैं, एडिशनल चीजें भी लिख सकते हैं, बट यू हैव टू सी द लिमिटेशन ऑफ द नंबर ऑफ पेज एंड द नंबर ऑफ वर्ड्स. सो आप प्राइमरी चीजों को पहले लिखें, ठीक है. ऑल्सो जब आप पढ़ रहे हो तो आप ये ध्यान दीजिए कि सी
इवेंट आर लिंक्ड। जैसे इफ यू सी द वार ऑफ 62-65, उसके बाद क्या हुआ, रॉका फॉर्मेशन। देन इफ यू सी कारगिल वार, इसके बाद क्या हुआ, एंटी आर फॉर्मेशन। 26/11 अटैक, वहां पे क्या हो रहा है, एनआईए आ रही है, एंटी आर आ रही है। क्यों? क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते वक्त यू हैव टू रिमेंबर द इवेंट्स एंड द इफेक्ट ऑफ इवेंट। इवेंट जब आ रहा है तो इवेंट के बाद कुछ घटनाएं हो रहे हैं, सी हाउ इवन द ऑर्गेनाइजेशन आर बिल्ड आफ्टर द इफेक्ट ऑफ दीज मेजर इंसिडेंट्स। इवन आप इंसिडेंट्स के थ्रू भी पूरी इंटरनल सिक्योरिटी को पढ़ सकते हैं। इवन द ओल्डर क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल क्वेश्चन, द इंसिडेंट्स ऑफ नक्सलबारी हैपेंड एंड देन द नक्सलिज्म अराइज्ड। तो ऐसे आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगेन यू कैन राइट द कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, give out the major sources of terror funding in India. So direct question. First question is give out the major source of terror funding. Sources बताना है. Second is efforts being made to curtail the sources. Again I have told you government effort फिर से पूछ दिया. See you can see मैं इतने देर से बोल रहा है government effort is very important. Second thing, in the light of this also discuss the aims and objective of no money for terror. तो क्या बताना है इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव, इस चीज का नो मनी फॉर टेरर, दैट वाज रिसेंटली हेल्ड एट न्यू दिल्ली कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पर देखिए द क्वेश्चन हैज डायरेक्टली कम फ्रॉम करंट अफेयर का पार्ट है, एंड देन इट हैज लिंक टू द ट्रेडिशनल थिंग, एंड व्हाट वाज द ट्रेडिशनल क्वेश्चन, टेरर फंडिंग। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, बी प्रिपेयर्ड। चलिए अगेन हाउ टू बिगिन विथ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप बताइए, फिर मेरे से ही बता लोगे, ठीक है। तो आप एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का क्या रैंक इज पुअर और कैसे, क्योंकि एवेन्यूज ऑफ टेरर फंडिंग मिल जाता है यहाँ पे, और क्या है एवेन्यूज दैट विल बी राइटिंग इन मेन बॉडी, क्योंकि मेन बॉडी में टेरर फंडिंग पूछा है, तो ऐसे आप लिंक कर सकते हैं, ओके। और भी अलग इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इस बार मैं आपको एक ही इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 इंट्रोडक्शन हर क्वेश्चन में दे चुका हूँ। यू विल बी प्रैक्टिसिंग दिस, खुद से आप सोचिए। मेन बॉडी पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट वाज सोर्स ऑफ मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग। मेजर सोर्स क्या है? फॉर एग्जांपल स्टेट स्पॉन्सरशिप, कैसे? देन अगेन वन फेमस एग्जांपल, पाकिस्तान इज फंडिंग टेररिज्म इन कश्मीर, militancy in Kashmir, okay. Then narco trafficking, कैसे? If you see narco trafficking is a major source of terror funding. Golden Crescent and Golden Triangle, you have already seen that India is placed between Golden Crescent and गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। अब ये कहाँ, आप देखोगे म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, यहाँ पे पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान एंड ईरान। इफ यू सी these are golden crescent and golden triangle for drug trafficking, opium trade. If you see the center of global narco trafficking is in Afghanistan. Afghanistan में जो तालिबान है that sources is major money through narco trafficking. Even the organized group and the insurgent have a nexus in northeastern region of India through drugs, ठीक है, और इससे ड्रग ट्रैफिकिंग होता है। देन एक्सटॉर्शन, टैक्सेशन एंड स्मगलिंग,
अगेन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की आप एग्जांपल लेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे स्मगलिंग हो रही है. देन इफ यू सी इवन इन नागालैंड, नागालैंड का इशू क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ मनी जो नागालैंड को इंसर्जेंट हटाने के लिए दे रहे हैं, दैट इज गोइंग ऑन एक्सटॉर्शन, टैक्सेशन. NSCN, different faction of NSCN is actually using extorting the money even from the government officials. Even up Naxalism में आप देखिएगा, Naxals are doing the same thing. From rich businessmen, they will extort the money. NGO, charity and zakats. There are different NGO front runners. They do the charity work for terrorist group. Jamaat-e Islamiyah was banned. I have already told you in today's class itself. Even PFI was banned because somewhere or the other they were linked to the terrorist activities. Counterfeiting of Indian currency. This is again the major source of money for terrorist funding. This happens through Nepal, through Pakistan border. और वो economic sovereignty of India को क्वेश्चन कर रहे हैं. And again UPSC has asked a question on how economic sovereignty of India is hampering due to internal security threat. And one such example is counterfeiting of Indian currencies, use loss to exchequer. Then hawala, money laundering and shell companies. Know how these are linked. Shell companies are formed and through this the black money is actually money laundered through shell company. यहाँ का ही ब्लैक मनी बाहर चला जाता है एंड दैट वो घूम के यहाँ आ जाता है. एंड हेयर वन मोर पीपल इज हेल्पिंग, दैट इज हवाला ट्रांजेक्टर. आई हैव ऑलरेडी सो दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ हाउ यू कैन राइट द आंसर. इसको आप अनदर वे में भी लिख सकते हैं. कैसे? थिंक, कैसे आप सोच सकते हैं इसको? आप ये सोचिए, हाउ कुड यू थिंक? Thinking, how could you develop thinking? Again I have told event is important. Now you see different event and different activities. For example, आपको नहीं पता है terror funding, but you know who are terrorists. For example, you know Taliban. ठीक है? For example, you know ISIS. For example, you know insurgent group in northeast. For example, you know Naxals. अब आप बताइए कि what are the ways they earn money? Taliban, you can write golden crescent, golden triangle, opium trade. Then you can easily like narco trafficking. आप पहुंच सकते हैं अगर नहीं भी पता है आपको. ISIS, आपको पता है they do black marketing of oil. Black marketing of oil. Turkey is one of the buyer. It is alleged that Turkey is buying oils from ISIS. So again you can write this. ISIS is also getting charity, and that is the reason why terrorist activity, terrorist organization are showing the after the incidents is happening, they are claiming that this I have done this. Why? Because they want name, and because of that they will get fundings. Because after the global war of terror, it was like after the 26/11 attack, the 9/11 attack of US. After that, there was a global war on terror, and in that the most suffered people was by terrorists was funding. Funding was mostly affected. तो जब 9/11 के अटैक के बाद ग्लोबल वार ऑन टेरर हुआ, तो देयर फंडिंग वाज मोस्टली कटेड डाउन, एंड सो दे find new ways of funding, and one of them was nexus with organized crime. So all this you can write. ठीक है, चलिए. तो इसी तरह आप देख सकते हैं इंसर्जेंट, you can easily write about extortion, the smuggling part, नक्सल्स, you can think of extortion. तो ऐसे भी आप अप्रोच कर सकते हैं आंसर को, आप सोच सकते हैं उस डायरेक्शन में अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है तो. ओके, the next part,
नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट मेजर्स. मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं? फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी मेजर्स, UAPA. UAPA is the first law that defines terrorism. Here it is defining that it is helping to check against terrorist funding. Then terror funding and fake currency division. ये कहाँ पे है? ये NIA के अंदर डिवीजन है, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी. Then this is again checking out whether the fake currency and funding of terror funding. Then FIUs. FIUs, I have already told you that they are helping you to erase any suspicious activities. Okay. Then coordinated efforts with states. How? See, if you see in 2018, the states has been given notification about how to deal with money laundering. See, for example, if FIUs give a suspicious activity, so it will also suggest, center will suggest state that this has been suspicious activity. They have AML, anti money laundering steps. Then counter financing to terrorism, combat financing to terrorism. They will take steps against this. Coordinated effort with the state. Then international leadership. India is leading. How? For example, Interpol meeting was there. For example, UN conference was there recently, and in those conference, in those meetings, India is pitching itself. India is acting as a leader for paving the way against terror funding. Then international cooperation. International cooperation is very much required in banning the terror funding. For example, ये तो इंडियन पर्सपेक्टिव में है, लेकिन आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी लिखेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी इज FATF. तो FATF को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे, थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन. FATF इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी फॉर अगेंस्ट टेरर फंडिंग, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग पे ये प्रिवेंट करता है. इंडिया में भी आफ्टर FATF एक्टिविटीज ऑफ FATF we have also Act PMLA, Prevention of Money Laundering Act 2002. FATF is also was also in news. Blacklisting of grey listing of Pakistan, ये आप हमेशा ही न्यूज़ में था. तो FATF को आप बोल सकते. अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो यू कैन राइट लाइक UN Office of Counter Terrorism, UN Global Program Against Money Laundering, then International Convention for Suppression of Financing of Terrorists. So these are the body you can also mention. आप इनके बारे में भी एक दो लाइन पढ़िएगा, इसको भी आप एग्जाम में आपको काम आ सकता है कहीं भी लिखने के लिए. सो यू हैव रेड द मेजर्स. नाउ इट्स द थर्ड पार्ट. सी नाउ हियर इज अ ट्रिक. आपको जल्दी जल्दी लिखना है. क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछ दिया, यानी ईच क्वेश्चन इज एक्चुअली ऑफ 5 मार्क्स. तो आपको कम पॉइंट्स में शॉर्ट में आंसर लिखना है. इनफैक्ट ये जो सारे पॉइंट है डेट इज ऑल्सो आप लिख नहीं पाओगे एग्जाम में, पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम को मिलता है ना. अराउंड 11 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है 15 मार्क का क्वेश्चन. तो थिंक 15 पॉइंट्स लिखना मतलब लेस देन 1 मिनट का टाइम मिल रहा है आपको. तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. नो मनी फॉर टेरर. व्हाट वाज द एम? एम वाज फॉर combating terror funding through worldwide. This was the 3rd conference in Delhi. It was started in France, Paris. Then how? Through international collaboration कीजिए. Then laws लाइए, information sharing you have to do. Then finally through legal framework we could stop the terror funding. That you can write. Last part, what you have to do? You have to do a conclusion. You have to write a conclusion. You can easily write conclusion. Conclusion में क्या करना है? For example, what you have written, how the different efforts, how what was needed, way forward की तरह आप लिख सकते हैं कि आपको सर्विलेंस करना है, लीगल फ्रेमवर्क लाना है, ये सारी चीज़ आप लिख सकते हैं. इतने ज़्यादा हमने आपको अभी बताया है, आप एक प्रैक्टिस करेंगे कंक्लूजन की. ठीक है. सो all the 4 questions which was in internal security, this has been discussed.
and I think you like the classes. Then again, you have you taken the class. Now do one thing, that you just write the question after reading the class, after reading your notes, you write the question again, all the question you write it again, and then you compare with what you have written from your class notes, from the video, and see that whether you have followed the thing, whether you have presented it in a more better way or in less better way. So you focus on presentation while writing. Thank you very much. Have a good day.